Students, now you have understood that how you proceed with Newton's method and how it works. Now we are going to derive the formula for the iterations. So students, सबसे पहले what was the first step? Actually, the first step was that we had considered an initial guess. This was your initial guess, x naught. And then we had drawn a tangent line. So what is the tangent line equation or equation for this tangent line at this point? So this is simply the point slope formula for this equation of the straight line is, so what is the point? Y minus y1, oh sorry, y naught is the point. So y minus y naught over x minus x naught is equal to f prime x naught. So actually this is this you can simply consider, students, if you don't remember this formula, so then I may simply recall you by the equation of the straight line where you have the 2 points. So that was y minus y1 is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 into x minus x1. And that was basically your slope. So see, if you simply take this x minus x naught to the other side, so this becomes the equation of the general form of the equation of the straight line. So student, this is since we have 1 point given, and that is the point at which we are going to find out the slope or the tangent. So this is the equation. So y minus, basically this is the formula for the slope. So slope is the derivative. So that is y minus y1 y naught over x minus x naught. So students, so this is your this was your first step. And now what we are going to do, so that the next step is very simple, and automatically you see you will drive this formula very automatically, and it comes with the by just following the steps. बेटा मैं आपको बताता चलो कि चले पीछे से वापस पीछे चलते हैं कि आपने क्या किया कि पहला स्टेप ये था कि आपके पास आपने एक इनिशियल गैस लिया, दिस वाज योर इनिशियल गैस एक्स नॉट, और बेटा उसके बाद आपने क्या किया कि कर्व के ऊपर जो पॉइंट है एक्स नॉट वाई नॉट, उसके ऊपर आपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ की, और टेंजेंट लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या है, y माइनस वाई नॉट ओवर एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट। और बेटा ये x और y आपके पास क्या है, ये तो बेसिकली जनरल आपके पास वैल्यूज है ना x और y की, जबकि एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपने स्लोप निकाला या टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया, सो दैट इज दैट द पॉइंट्स आर x नॉट y नॉट। तो बेटा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, so now what we are going to do is that we have this line here, this tangent line, and this tangent line now cuts this axis x-axis at x1. So students, the important thing is that if it touches the x-axis at this point, y is equal to 0. Now we call this x to be, because x was the general value, x was the general x point. So we call to be x to be x1. We call this a new name. Students, this is the new name, x1. तो बेटा हम क्या कर रहे हैं कि देखें ये वाली लाइन जो है, ये टेंजेंट लाइन जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करती है, वहां पे डेफिनेटली आपका वाई तो जीरो होगा। अगर वाई बेटा जीरो है और हमने एक्स को क्या किया, एक्स ही बेसिकली तो एक्स ही पॉइंट था, अब उसका नाम हमने रख दिया एक्स की जगह पे x1 रख दिया। तो अब आप इक्वेशन ऑफ दी जो टेंजेंट लाइन थी उसके अंदर ये वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दें कि y is equal to 0 and x is equal to x1. So students, this is what I have simply written it here. So you can see here this cuts the x-axis or touches or crosses the x-axis, and here y is equal to 0 and x is equal to x1. Now student, just substitute the values here. So instead of y, so we have 0 here, and y naught is same. So x, instead of x we have x1 here. So for this x naught, this is same, and that is equal to f prime of x naught. And now students, minus, see, you just simplify the things, minus y naught,
and what I am going to do is this is just the cross multiplication. बेटा मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको उठा के नीचे रख दिया और इसको उठा के ऊपर कर दिया. So this is just changing their positions. So minus y naught over f prime of x naught is equal to x1 minus x naught. बेटा यहाँ पे देखें कि what we are going to do. Basically the ultimate idea is to find out this value, and similarly we can go on and find out the closest value to the root. So basically the idea is to find out this value x1. तो बेटा आपका बेसिकली मकसद क्या था? मकसद आपका ये था, ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं ताकि आप x1 निकाला, फिर x2 निकालेंगे, फिर x3 निकालेंगे. तो लिहाजा अभी हमारे पास x0 था. अब हमने अल्टीमेट गोल क्या है हमारा कि हमने x1 की वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ से इक्वेशन से आप देखें तो minus y naught over f prime of x naught is equal to x1 minus x naught. तो बेटा अब आपके पास क्या है? x1 is equal to x naught, दूसरी तरफ ले गए x naught minus, now instead of this y naught you simply write f of x naught over f prime of x naught. So y naught की जगह पे बेटा मैंने f of x naught कर दिया, बाकी तो सारा कुछ वैसे ही है. So this gives you the first value of the this new iteration x1. So x1 is equal to x naught minus f of x naught over f minus f prime of x naught. So students, on the similar lines, now the procedure will be same. So there will be no change at all. So the idea is very similar to the previous one. So what you do, you can simply find out the next value, and that is x2. So x2 is equal to, instead of this x naught, so this was x1. So now x, instead of x1, this was x2. And now x naught, instead of x naught, this is now x1 minus f of x1 over f prime of x1. तो बेटा आपके पास क्या है कि देखें आपके पास चूंकि प्रोसीजर x1 आपने निकाल लिया, तो अगर x1 निकाल लिया तो फिर x2, x3, x4, x5 कोई भी आप बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं. तो लिहाजा हम क्या करें, ऑन द सिमिलर लाइन प्रूव करने की बजाय हम क्या करें, जस्ट हम यहीं पे वैल्यूज चेंज कर रहे हैं. तो यू कैन सिंपली गेट द वैल्यू ऑफ x2. x2 बेटा क्या बन जाएगा, x1 की जगह पे x2 आ गया, x0 की जगह पे x1 आ गया, इधर भी x0 की जगह पे x1 आ गया. तो ये आपका फार्मूला बन गया. And students, if you want to find out the general form of this formula, so what can you do is, so you simply what you can do is xn is equal to xn minus 1. देखें एक कम हो रही है वैल्यू. ये बेटा याद रखिएगा कि इधर नया पॉइंट है तो इधर सारे उससे पिछले पॉइंट है. तो xn minus 1 minus f of xn minus 1 over f prime xn minus 1, and xn plus 1 is the next value is xn plus 1 is equal to xn minus f of xn divided by f prime of xn. So students, this was the derivation, and here just let me tell you that in some of the books this xn is written to be the general form, and in many other books xn plus 1 is considered to be the general form. So no problem at all. So you can write any formula, and there is no problem and there is no harm at all while writing these formulas. So this was all about the method and the derivation of this formula. तो बेटा आपको तरीका भी समझ आ गया कि आपने किस तरीके से रूट निकालना है, लॉजिक आपको समझ आ गया है. मैथमेटिकली तो आप देख लें कि काम बड़ा सिंपल है. जस्ट वैल्यू आपको पता हो, फंक्शन गिवन हो, डेरिवेटिव निकालें, फंक्शन की वैल्यू निकालें, डेरिवेटिव उसकी डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल लें, इनिशियल गेस पुट करें, और आखिरकार बेटा आपके पास नया पॉइंट आ जाएगा. क्वेश्चन करेंगे तो मेरे ख्याल में इट वुड बी मच सिंपल फॉर यू. सो लेट्स डू एन एग्जांपल हियर. So students, this is a very simple example from the same book. So what it says that consider applying Newton's method to the function f of x is equal to 2 minus e raised to the power x, which is the same as we used for the bisection method. बेटा मुझे जो याद पड़ता है कि हमने शायद bisection में भी यही वाला एग्जांपल हमने ली थी. So anyhow we simply choose x naught is equal to 0 and then compute as follows. So beta, what is your x1 here? X naught minus, this was the function
एंड दिस वाज द डेरिवेटिव। तो इसका बेटा डेरिवेटिव क्या निकलेगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स बन जाएगा माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। तो एक्स की जगह पे आपने एक्स नॉट पुट कर दिया, सो दिस गिव्स यू 1। And now to find out the next value x2, so on the similar pattern, so you get 0.735758, and now x3, so this was 0.6940. As student, I know that this was rather quick, and but the inshallah I will take another example and I will go very slow uh, with that method, and inshallah you will understand how it works. But the main idea of showing this example is that just to show, if I remember correctly, that you got this answer after 9 iterations, I guess, if I remember correctly, or maybe 8 iterations. But in this case, even after the lapse of 3 iterations, so you have achieved the same answer. तो बेटा बेसिकली मेरा मकसद यहाँ पर आपको कोई एक एग्जाम्पल को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना नहीं है, वो मैं आगे इंशाल्लाह आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा। लेकिन मेन आइडिया मेरा यहाँ पर ये एग्जाम्पल शो करने का ये था ताकि मैं आपको बता सकूं कि अगर आप कंपेयर करें बाइसेक्शन मेथड के साथ, तो बेटा आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो काम आपने बाइसेक्शन मेथड में किया था, शायद ये जो आंसर आपने निकाला था वो शायद 8 या 9 आइट्रेशंस के बाद निकला था। लेकिन इस केस में आपके पास 3 आइट्रेशंस के बाद आपका ये जो आंसर है वो आपका निकल आया है। तो बेटा इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि योर न्यूटन मेथड इज मच फास्टर देन द बाइसेक्शन मेथड। Beta, now there is a very interesting and important thing that what it says that there are examples for which the convergence will be poor or even for which convergence does not occur. बेटा बाज का ऐसा होता है कि आप इनिशियल गैस लेते हैं और आप उससे रूट फाइंड करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन बाज का तो आप कन्वर्ज करने की बजाय डाइवर्ज करना शुरू कर देते हैं और इवन आपकी जो यानी कि आप रूट की तरफ जाने की बजाय उसकी उल्टी तरफ चलना शुरू कर देते हैं और बाज का तो आपका वो पॉइंट लेते हैं तो रूट निकलता ही नहीं है, यानी कि वो अगली वैल्यू ही नहीं आती, तो इसका मतलब आपको वहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। सो एंड दिस कैन बी क्योर्ड बाय ऑब्टेनिंग अ बेटर इनिशियल गैस। बेटा समटाइम्स इट हैपेंस दैट you simply if you simply choose this value, you choose an initial guess, so what happens that sometimes you don't get the next value, or sometimes it happens that you get a very poor approximation, even you feel that you are diverging towards the diverging, not converging to the actual root. So the best idea is that you choose a better value of the initial guess. तो बेटा इसी तरह यह है, थोड़ा सा कोई और पॉइंट लेके चेक करें तो अगर उससे बेहतर आना शुरू हो जाता है तो इट मींस दैट इज अ बेटर गेस। So let's take the example where you will have the difficulty, or maybe you have the divergence, or sometimes you don't have the next value. For example, students, if you see this one, if you see this function, and if you take the initial guess to be at this point, जहां पे बेटा आपके पास डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, 0, and if you have the derivative to be equal to 0, so what happens students in this case आप देखें कि the derivative is 0, and since in the formula, अगर बेटा मैं वापस फार्मूले के ऊपर जाऊं, if I simply go back to the formula, so derivative comes in the denominator. If the derivative is in the denominator and if it is equal to 0, तो ये तो undefined वाली situation होना शुरू हो जाएगी, लिहाजा it means this guess is not a good guess, so this is a very poor initial guess, so it means you should change the initial guess. So students, similarly let's consider another example, and you had, for example, this curve, and this was the interval of this function, see where this curve is lying, and now you are considering this initial guess. And if you make this tangent line here at this point, you will see that it means you are going very away from the exact point. तो बेटा नीचे इधर आने की बजाय आप दूर चले गए हैं। अगर आप इस पॉइंट के ऊपर लेते हैं, आप टेंजेंट इनिशियल गैस लेते हैं, इसके ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं, तो आप देखें कि आप
इंटरवल से अगर इंटरवल वैल्यूज आपका इधर से लेकर इधर तक था, इस पॉइंट तक, तो आप इंटरवल से भी बाहर निकल गए, इसका मतलब है कि अब आप के ये जो इनिशियल गैस था इट वाज नॉट अ गुड गैस, सो इट्स बेटर दैट यू चेंज योर initial guess. So students, now we have done with the examples where you cannot simply find out the root or better root, or maybe sometimes it happens that you have the uh, divergence. So students, let's stop now, and so that we can discuss some questions. And now after answering your questions, inshallah, we will talk about the error of this Newton method, and also we will discuss about, inshallah, about an example. So let's stop now.